Hello everyone. So in this lecture we will be looking at exercise from exemplar of vector algebra. So in this lecture we will be only doing short questions. So notes will be available below the video, and let's see our first question here. So find the unit vector in the direction of sum of these two vectors. So let's find the sum of these two vectors. So a vector plus b vector कितना होगा वो? So let's add their components. So x a के x component 2 है, b का कितना है? 0 है, because this is 0 I cap plus 2 j cap plus k cap, right? So b vector is, if you look carefully, it is 0 I cap plus 2 j cap plus k cap. So I cap, and then minus 1 plus 2 j cap, then k cap का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, वहाँ पे 1 है, so times k cap. So sum of these two vectors is 2 I cap plus j cap plus 2 k cap. So let's call this vector as c vector, right? This is sum of these two vectors a plus b. This is a c vector. What is the magnitude of c? या फिर magnitude of a plus b? So this is nothing but square root of squares of the coefficients. So 4 plus 1 plus 4, which is root 9, which is equal to 3. And c cap now can be defined as c vector divided by magnitude of c. So which is the a plus b vector divided by magnitude of a plus b, which is, so we have to divide each and every component here with number 3, right? So it is this vector 2i plus j plus 2k divided by 3, so which gives me unit vector क्या आ रहा है? 2 by 3 I cap plus 1 by 3 j cap plus 2 by 3 k cap. So let's check our answer from the answer keys. So first question, answer is 1/3 common, 2 plus 1 plus 2 I cap j cap k cap, right? So let's move to next question, question number 2. So in this question क्या given है? So a vector given है, b vector given है, find the unit vector in the direction of 6b. So ठीक है, so do we even need to calculate 6b vector? ठीक है, निकाल देते हैं. So first part, so 6b vector कितना है? 6b vector is 6 times b vector, so it is 12 I cap plus 6 j cap minus 2 k cap, and let's call this vector as some vector v. ठीक है, this is vector v. So हमें क्या निकालना? v cap, right? Unit vector in this direction. So this will be v vector divided by magnitude of v. So now we can define magnitude of v. तो magnitude of v vector कितना आएगा? So it is square root of this vector. So 12 square plus 6 square plus में minus 2 का square, which is I can take 2 square common, so 2 outside, and I'm left with 6 square, which is 36, 3 square, which is 9, and 1 square, which is 1. So this is 47, 46 inside. So ठीक है, nothing else is coming out. So we can say कि या कुछ हमने गड़बड़ कर दी. So यहाँ पे भी 12 आएगा, right? This is also 12, 6 times किया. So let's correct this. So what are all these numbers? So let's square and add. So 12 square plus 6 square plus minus 12 का square. So maybe I can take 6 common, क्योंकि 6 square common लेंगे अगर बाहर,
तो बाहर से x आएगा, तो अंदर क्या बचेगा 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एंड विच इज 4 प्लस 1 प्लस 4 which is 9, so 6 into root 9 which is 6 into 3 which is 18, so this is square root of it. So now let's divide by 18, so v cap कितना आ रहा है हमारा v vector which is our 6b vector, right? तो हमने v vector define किया इस first part के लिए, so v cap is v vector which is 12i plus 6j minus 12k divided by 18. So you don't need to do this, right? आप क्या कर सकते हो, simply b cap भी निकाल सकते हो, right? क्योंकि unit vector in the direction of b cap, right? Unit vector in direction of b cap, in direction of b vector, I'm sorry, of b vector will be same as unit vector in direction of 6b vector, right? Okay. Unit vector in direction of 6b वेक्टर, क्योंकि इन दोनों का डायरेक्शन सेम है एंड यूनिट वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन सिग्निफाई करता है, इट्स अ वेक्टर ऑफ लेंथ 1, सो चाहे आप b वेक्टर से निकालो या 6b वेक्टर से, यू विल गेट द सेम आंसर एंड v कैप कितना आएगा 2/3 i कैप प्लस 1/3 j कैप minus 2/3 k cap. So let's check our answer for first part here. So यहाँ पे first part का आंसर है 2/3 1 and minus 2/3 I and 1/3 बाहर है, I cap j cap k cap, so correct. So let's do second part, 2a minus b के डायरेक्शन में हम डिफाइन करेंगे अब यूनिट वेक्टर. So let's find first 2a minus b वेक्टर क्या है and let's say we will call it u vector, ठीक है, this is u vector. So 2a minus b निकालते हैं, so this is equal to twice of I, j and 2k, so I cap plus j cap plus 2k cap minus b vector which is 2i plus j minus 2k, 2i plus j minus 2k, which simplifies to 2i plus 2j plus 4k minus 2i minus j plus 2k, and overall this becomes 0 times I plus j plus 6 times k. Now so this is our u vector, right? ठीक है, एंड इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर डिफाइन करना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ u निकाल लेते हैं, तो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, स्क्वायर रूट 37, and u cap now can be defined as u vector divided by magnitude of u, and which is j cap plus 6k cap divided by root 37, so 1 by root 37 j cap plus 6 by root 37 k cap is our unit vector. So let's check this answer. So it is also correct. So let's move to third question now. Okay, so question is find the unit vector in the direction of PQ where P and Q have coordinates 5, 0, 8 and 3, 3, 2. So we have coordinates of P as 5, 0, 8 and Q के coordinates भी given है 3, 3, 2, and we have to define PQ vector from P to Q. So PQ vector final point Q है, तो final minus initial definition है, तो 3 minus 5 I cap plus 3 minus 0 j cap plus 2 minus 8 k cap. So which simplifies to minus 2 I cap plus 3 j cap
माइनस 6 के कैप, बट हमें क्या डिफाइन करना है, इस डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर डिफाइन करना. सो लेट्स फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू. इट इज 4 plus 9 plus 36. So this sums up to root 49, which is 7. So PQ cap will be defined as PQ vector divided by magnitude of PQ. और ये कितना होगा, minus 2 by 7 I cap plus 3 by 7 J cap minus 6 by 7 K cap. Let's check our answer. So this is question number 3. So unit vector is minus 2 by 7 I cap plus 3 by 7 J cap minus 6 by 7 K cap. So third ये रहा. So अगला question, fourth. So if A and B are position vectors of A and B, so ये let's say origin है, origin के respect में ये point A है, and A का position vector, so OA vector कितना है, it is A vector, right? ठीक है, this is A vector, and there is a point B, let's say this is the point B, and यहाँ का position vector is OB vector, and which is equal to small b vector. Okay. Find the position vector of point C. So BA produced such that BC is equal to so क्या given है, BC is equal to 1.5 times BA. Okay, so BC by BA is 3 by 2, but ये point internal है या external है? So if you read carefully here, it says BA is produced, ठीक है. So find the position of the point से, तो BA को हमने produce किया, so in that direction, so C must lie somewhere here, ठीक है. यहाँ पे कोई point C है, ठीक है. हमें क्या निकालना है, इसका position vector. Let's say इसका position vector R है, ठीक है. So we have to find OC vector या फिर R vector, right? ठीक है. So question है OC vector क्या है या फिर R vector. So and given है B and it is this is, so this is the external point, and given है BC distance is like 3 and BA जो है 2 है, right? So from the diagram we can clearly see कि हमें इस रेशो की जरूरत नहीं है, right? फॉर्मूला में हमें इसकी जरूरत नहीं है. What we require is AC रेशो BC, right? ठीक है, फर्स्ट पॉइंट का डिस्टेंस एंड सेकंड पॉइंट का डिस्टेंस. सो वी रिक्वायर दिस AC हमें चाहिए, तो दिस मस्ट बी इन रेशियो 1, राइट? क्योंकि 1 plus 2 शुड बी 3. सो AC इज लाइक 1 एंड BC कितना है? सो दिस इज 2. सो दिस रेशियो इज 1:2. एंड यू कैन डू दिस यूजिंग सिंपल अलजेब्रा आल्सो, कि यू कैन ऑलवेज राइट फ्रॉम दैट डायग्राम कि AB को हम क्या लिख सकते हैं. AB को मैं AC और BC के टर्म्स में लिख सकता हूँ. सो BC minus, so this BA will become BC minus AB, sorry, minus AC, and yeah, okay, so BC को मैंने BC ही रहने दिया, and this is equal to 3/2, and I can find now AC by BC by solving this equation. If I solve this, I will get 2BC is equal to 3BC minus 2AC, and I can find BC is equal to twice of AC, and I can find AC by BC is equal to half. So you can do this calculation, or you can write it directly by just drawing the picture, right? आपने correctly हमने देखा कि हमने BA को produce किया बाहर की तरफ. So this is external वाला section formula रहेगा यहाँ पे, and we found the ratio M:N. So M:N, right? M:N is 1:2, right? So AC का डिस्टेंस कितना है पॉइंट C से? A का डिस्टेंस कितना है? 1, राइट? ठीक है, 1 times some K, एंड B का डिस्टेंस कितना? 3 times some K. So हमें क्या चाहिए? BC, राइट? So
क्या गड़बड़ कर दिया हमने? हाँ, BC is 3, I'm sorry, B to C is 3. So यहाँ पे इस कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ है? हाँ नहीं, यहाँ पे दिस शुड बी 3 times AC. So यहाँ पे बच रहा है 3 times AC is equal to BC. तो ये भी 1/3, I'm sorry, this is 1/3, right? So if you look carefully, हमें किसकी जरूरत नहीं है? इसकी जरूरत नहीं है, AB डिस्टेंस की जरूरत नहीं है फॉर्मूला के लिए, राइट? We do not require AB, which is of distance 2, right? It is 2 times K. We require first point से distance उसका R का and second point से distance. So R vector is defined as M times B vector minus N times A vector divided by M minus N for external division, right? So M कितना है? So first point से distance है 1 and B vector कितना है? So this is B vector minus 3 times A vector divided by 1 minus 3. So R vector, this is basically OC vector, position vector of point C. This comes out to be B vector divided by minus 3A vector divided by minus 2. So this is 3 by 2A vector. So maybe I can multiply numerator with negative minus B vector, right? 3 times A vector minus B vector divided by 2. So let's check our answer. So for this fourth question, our answer is 3B minus A divided by 2. And हमने यहाँ पे क्या लिखा? 3A. So what is the mistake here? So BC is 1.5 times BA. हाँ, तो C उस तरफ होगा. And 1 times B vector आएगा. हमने BA को प्रोड्यूस किया, राइट? C in BA produce that. हाँ ठीक है. So I think NCERT के पीछे गलत आंसर गिवन है. The answer must be 3A minus A वाला वेक्टर 3 से मल्टीप्लाई होगा. So this is the correct answer. NCERT exemplar के पीछे वाला आंसर you can correct. So I can put it in the notes कि अगर कोई और भी exemplar यूज कर रहा है ये वाला, so this is the wrong result given at the back of the exemplar. So this is not correct. If you read carefully and draw the diagram, this is the diagram you will get and this is the result you should get. Next question. So let's move to fifth question. Using vectors, find the value of k such that points this and this are collinear. Okay, so collinearity के लिए I will use simple. Let's say this is point A is this is B and this is C. तो मेरे पास 3 points है A, B, C. So what I will do, अगर ये तीनों points collinear है, तो A के coordinates है k, -10, 3. B के coordinates हैं 1, -1, 3 and C के coordinates हैं 3, 5, 3. So what I will do, I will construct BC vector and I will construct AB vector and I can say कि A BC vector, right, can be written as lambda times AB vector because they are collinear, right? So if A, B, C are collinear, right? इसका मतलब क्या है? B C vector is collinear with, ठीक है, B C A B और A C तीनों collinear होंगे, right? Is collinear with किसके साथ collinear होगा?
So BC is collinear with AB vector, right? ठीक है. So now अगर ये दोनों कोलिनियर है तो मैं कोलिनियरिटी की कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है. सो लेट्स नाउ फाइंड आवर AB वेक्टर एंड BC वेक्टर. तो BC वेक्टर कितना है? BC वेक्टर इज सो लेट्स डू इट ऑन द राइट साइड. ठीक है, BC वेक्टर कितना आ रहा है? फाइनल पॉइंट C है तो 3 - 1 I कैप प्लस 5 + 1 J कैप प्लस 3 - 3 K कैप 2I plus 6J plus 0K. Let's find AB vector. So AB vector कितना आ रहा है? तो फाइनल पॉइंट है B, इनिशियल पॉइंट है A. So we have 1 - K I cap plus -1 plus 10 J cap plus 3 - 3 K cap. So it is 1 - K I cap plus 9 J cap plus 0 K cap. And let's use our definition. BC vector is equal to, so 2I, so from 1, 2 and 3, right? From 1, 2 and 3, 2I plus 6J plus 0K should be equal to some lambda times AB vector, which is 1 minus KI, and lambda यहाँ पे multiply होगा 9 lambda J plus 0K, right? तो कंपेयर करेंगे K कैप का कोएफिशिएंट 0 is equal to 0, so ठीक है, this works. Let's compare now J कैप का कोएफिशिएंट. J कैप का कोएफिशिएंट I get 6 is equal to 9 lambda, and we find the value of lambda जो हमने इंट्रोड्यूस किया था कांस्टेंट. लैम्डा कितना आ रहा है? 2/3. अब I कैप का कोएफिशिएंट देखते हैं. I कैप का कोएफिशिएंट है 2 and it should be equal to lambda times 1 minus K. But lambda कितना है? 2/3. So 2 is equal to 2/3 times 1 minus K. Let's simplify this equation further. So 2 cancel. 3 left side multiply K. This is 1 minus K. K is equal to -2. So हमें K की वैल्यू मिल गई. For this is the value of K for which these 3 points are collinear. So let's check the answer for this question. So K is -2. So 6th question पे चलते हैं. A vector R is inclined at equal angles to 3 axes. If magnitude of R is 2 root 3, find the R vector. So, right. So, alpha is equal to beta is equal to gamma, right? ठीक है, इसका मतलब these are same, right? So, since alpha is equal to beta is equal to gamma, so इसका मतलब क्या? Cos alpha is equal to cos beta is equal to cos gamma, क्योंकि equally inclined है. So these are the angle made by the vector with x, y and z axis. So if it is equally inclined, then this is the condition, right? Okay. So this is equal to cos gamma. So basically I say L is equal to M is equal to N. So I will use the equation now. L square plus M square plus N square is 1, right? So I get 3 times L square is 1. So I get L की value आ रही है plus minus 1 by root 3. So and our vector R cap can be defined. So this is a unit vector, right? Okay, unit vector. Unit vector can be defined L I cap plus M J cap plus N K cap, which is basically now L I cap plus L J cap plus L K cap, right? क्योंकि L is equal to M is equal to N, and L की वैल्यू क्या हो सकती है? plus minus 1 by root 3. So plus minus 1 by root 3 I cap plus minus 1 by root 3 J cap plus minus 1 by root 3 K cap. So I can take maybe this term common. So plus minus common. 1 by root 3 also common. So I can have I cap plus J cap plus K cap inside. So
सो हाउ कैन आई फाइंड, सो हमारे पास यूनिट वेक्टर तो आ गया उस डायरेक्शन में, राइट? ठीक है, क्योंकि हमने एंगल निकाल लिया, cos अल्फा cos बीटा cos गामा निकाल लिया, हमें यूनिट वेक्टर मिल गया। तो आर वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं? आर वेक्टर कैन बी डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ आर टाइम्स आर कैप, राइट? ठीक है, सो हमारे पास गिवन है ये जो वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है क्वेश्चन में गिवन है, इट इज 2√3, so this is 2√3 times this vector, which is plus minus 1 by root 3 I cap plus j cap plus k cap. So root 3 cancels and I get r vector क्या आ रहा है? Plus minus 2 I cap plus j cap plus k cap. So let's check our answer. So this is a vector that is equally inclined to all the axes and have length 2√3. So ऐसे दो वेक्टर्स आ रहे हैं, प्लस माइनस आ रहा है. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ये रहा, प्लस माइनस 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप. सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7. सो वेक्टर r हैज मैग्नीट्यूड 14. ठीक है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर गिवन है, कितना है? 14. एंड डायरेक्शन रेशियोज भी गिवन है उस वेक्टर के. सो डी आर 2 3 एंड -6. सो डी आर से तो डायरेक्शन कोसाइन से आप यूनिट वेक्टर बनाते हो, और डी आर से यू कैन डायरेक्टली कंस्ट्रक्ट वेक्टर्स कि इफ डी आर्स आर ए बी सी, राइट? तो अगर आपके पास डी आर्स गिवन है which are ABC, then your R vector is basically AI cap plus BJ cap plus CK cap. These are just the ratios, right? So हमारा R vector क्या आ गया? 2I cap plus 3J cap minus 6K cap. तो हमें वेक्टर भी गिवन है, R वेक्टर भी गिवन है, ठीक है? एंड यू कैन ऑलवेज चेक कि इसका लेंथ से 14 आ रहा है कि नहीं, ठीक है? Oh no, so let's correct this. So these are just signifying the direction in terms of whole numbers. So these will not give you the vector itself, but these are just signifying the vector का direction क्या है. So अब हम क्या करते हैं, इससे हम डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेते हैं. तो लेट्स डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे? तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं. मैग्नीट्यूड इसका कितना आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, विच इज 4 plus 9 plus 36, and which is root 49, which is 7. So हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस आ गया. वी विल डिवाइड एवरी ऑफ दीज विथ 7, राइट? 2/7, 3/7 एंड -6/7. तो हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, तो हम डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेते हैं. दीज आर LMN या फिर cos अल्फा cos बीटा cos गामा. तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस. ठीक है, हो गया. ठीक है, these are the direction cosines. Then what is the second part of the question? So it says and components of r, given that r makes an acute angle with the x-axis. So components of r कैसे निकालेंगे हम? So components of r, तो पहले हम r वेक्टर लिख लेते हैं. r वेक्टर किसके इक्वल होगा? तो इससे पहले हमें r कैप मिल जाएगा. डायरेक्शन कोसाइन इज सेम एज द यूनिट वेक्टर, है. तो 2/7 I cap plus 3/7 J cap minus 6/7 K cap, and so we can now find R vector. R vector कितना होगा? Magnitude of R times R cap. So हमें magnitude of R given है, कितना है? 14, right? हमें R cap भी given है, 2/7 I cap plus 3/7 J cap minus 6/7 K cap. So this is 4 I cap, अंदर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, so 6 J cap minus 12 K cap. Now what are the components of R vector? So components हमें स्केलर लिखने हैं, वेक्टर लिखने हैं. So vector components, scalar components. So we have to write vector components. So components, so vector components
ऑफ आर वेक्टर क्या होंगे? सो दीज आर दीज बेसिकली, राइट? ठीक है, अगर स्केलर पूछता तो वील जस्ट राइट 4 6 माइनस 12, बट वेक्टर कंपोनेंट्स के 4i, तो दिस सिग्निफाइज ये x डायरेक्शन में, कॉमा 6j, कॉमा माइनस 12k, राइट? So we have vector components and we have also the unit vector, right? Okay. So and direction cosine. So first part, second part. Let's check the answer. 2 by 7, 3 by 7 minus 6 by 7. So 2 by 7, 3 by 7 minus 6 by 7 and 4i, 6j minus 12k. Okay, so let's move to question number 8. So find a vector of magnitude 6 which is perpendicular to both vectors. So इन दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर वेक्टर हम कैसे निकालेंगे? So A क्रॉस B, राइट, क्या होता है? इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B वेक्टर, राइट? ठीक है, बट प्लस माइनस, राइट? ठीक है, सो हम A वेक्टर डिफाइन कर देते हैं 2i माइनस j प्लस 2k एंड B वेक्टर क्या डिफाइन कर देते हैं 4i माइनस j प्लस 3k. Let's find now a vector which is perpendicular to plane of A vector and B vector. तो जिस भी प्लेन में A और B वेक्टर लाई करता है उससे परपेंडिकुलर क्या होगा? A क्रॉस B होगा, which is I J K and 2 minus 1 2 and 4 minus 1 3. So let's open this. I कैप के साथ में आ रहा है माइनस 1 2 माइनस 1 3, माइनस j के साथ में आ रहा है और 2 2 4 3, k के साथ में आ रहा है 2 minus 1 4 minus 1. So let's open this up. We get I के साथ minus 3 plus 2, minus j के साथ 6 minus 8 and k के साथ minus 2 plus 4. So this is minus I cap plus 2j cap plus 2k cap. So this is A cross B. हमें क्या निकालना है? And let's call this vector something else. Let's call this C vector. ठीक है, let's call this C vector. हमें क्या निकालना है? वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 6. तो पहले क्या करते हैं, हम C कैप निकाल लेते हैं. पहले मैग्नीट्यूड ऑफ C निकालते हैं, which is square root of 1 plus 4 plus 4, which is root 9, which is 3. So C cap हमें मिल गया, C vector divided by magnitude of C, which is minus 1 by 3 I cap plus 2 by 3 j cap plus 2 by 3 k cap. Now we can find vector of magnitude 6 which is perpendicular to both A वेक्टर एंड B वेक्टर, है तो वो मैं उसको क्या लिख रहा हूँ, प्लस माइनस 6 टाइम्स C कैप, क्योंकि वो C कैप की डायरेक्शन में भी हो सकता है, उससे ऑपोजिट भी हो सकता है, राइट? सो वी आर पुटिंग प्लस माइनस फॉर दैट एंड 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यूनिट वेक्टर, सो इसका ताकि इसका लेंथ कितना हो जाए 6. ओके, सो वी हैव प्लस माइनस 6 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको एंड 6 टाइम्स माइनस 1 by 3 I कैप प्लस 2 by 3 j कैप plus 2 by 3 k cap. So this simplifies to minus plus 2 I cap plus minus 4 j cap plus minus 4 k cap. So
लेट्स चेक आवर आंसर। तो उसने एक ही आंसर दिया यहाँ पे 8th में। देयर आर टू पॉसिबल आंसर्स राइट। एक है -2i cap plus 4j cap plus 4k cap as given by the book, right? And other one is plus 2i cap, so इसका opposite, right? ठीक है। This is also of magnitude 6 and this is also perpendicular to a and b vector. Okay, let's move to next question, which is 9th. So this is find the angle between these two vectors. So cos theta is defined as a vector dot b vector divided by magnitude of a and magnitude of b. So ऊपर हमारे पास आ रहा है a dot b which is 2 into 3 प्लस में -1 into 4 प्लस में 1 into -1. So I multiply x का component with x, y का with y, z का with z divided by square root of, यहाँ पे coefficients के square तो 4 plus 1 plus 1 and यहाँ पे 9 plus 16 plus 1. So numerator simplifies to, so this is cos theta, right? Numerator simplifies to 6 minus 4 minus 1 divided by root 6 and root 26. So cos theta is 1 divided by, नीचे root of 6 से root 2 बाहर आया, root 26 से root 2 बाहर आया, तो I'll get 2 and 3 into 13 is 39. So theta is cos inverse 1 by 2 root 39. काफी weird सा आंसर आ रहा है। Let's check this first. तो 9th 156. तो ठीक है, 2 अंदर ले जाते हैं। So 39 into 4 6 3 12 156. Okay, so this is cos inverse 1 by square root of 156, same as NCERT exemplar. So next question, tenth. So a vector plus b vector plus c vector is 0. So show that the second result is, this result is true. Interpret the result geometrically. ठीक है। So if a vector plus b vector plus c vector is 0. So पहले हम क्या करते हैं, c vector को right side ले जाते हैं. We'll get a vector plus b vector is equal to minus c vector. And let's take cross product with a vector. So I will get a vector plus b vector का क्रॉस प्रोडक्ट विद a vector and then minus c vector का क्रॉस प्रोडक्ट विद a vector. So यहाँ पे I will get a vector cross a vector plus b vector cross a vector is equal to minus of c vector cross a vector. So a cross a, by definition it is magnitude of a sin कितना 0 into n cap. So sin 0 is 0, so this result is 0. So this is 0, null vector, right? ठीक है, null vector. So I will get b cross a is same as minus of c cross a. So मैं यहाँ राइट साइड में भी नेगेटिव एब्जॉर्ब कर सकता हूँ, बट मैं लेफ्ट से नेगेटिव बाहर निकाल लेता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे a क्रॉस b निकालना है. सो नेगेटिव ऑफ a क्रॉस b, राइट? So since a cross b is negative of b cross a, right? So minus of c cross a. So negative negative cancel and I get a cross b is same as c cross a. So this is the first part of the question. So similarly,
we will also prove let's say a cross b और b cross c में भी result निकाल सकते हैं. Let's this time let's take b on the right side. So a plus b plus c is null vector. Let's take c to the right side, b to the right side. So I will get a vector plus c vector is b vector, and मैं let's say you can take cross product with आप किसके साथ ले सकते हो, c के साथ ले लो या फिर a के साथ ले लो, sorry minus a, so you can take it with a या फिर c, so your choice. So let's take with cross product with a. So I will get c cross a cross c, a cross a plus अच्छा, this will give me the same result, right? A b and c a. So let's take with c now this time. So c के साथ लेते हैं. So a cross c plus में c cross c will be minus of b cross c. So this term is null vector. So I get a cross c is same as minus of b cross c. So question में मुझे b cross c चाहिए. So I will make this minus of c cross a, and this is equal to minus of b cross c. So negative negative cancels, and we have c cross a is equal to b cross c. So this is 2 and this is 1, and from 1 and 2 what can we say? A cross b is same as b cross c, and it is same as c cross a. तो ये तो प्रूफ हो गया, राइट? बट क्वेश्चन हैज अ सेकंड पार्ट कि so let's bring it down. Interpret the result geometrically. So geometrically इसका क्या मीनिंग है? So a plus b plus c is null vector. So we have already done such questions. So let's say this is a vector and this is b vector is in this direction, ठीक है? And इन सबको ऐड करना, इसके बाद एक c vector भी ड्रॉ करना है such that the total sum is 0. So it will point towards the initial point, right? ठीक है? तो c vector, right? क्योंकि यही मेरा अब इनिशियल पॉइंट हो गया, यही फाइनल पॉइंट हो गया. सो लुकिंग एट दिस डायग्राम आई कैन से a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इज 0, राइट? सो एंड हमारे पास गिवन है a क्रॉस b. सो a क्रॉस b क्या कौन सा वेक्टर होगा? सो a क्रॉस b इफ यू लुक इन दिस डायग्राम, सो a वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन एंड b वेक्टर so मैं a वेक्टर को रीड्रॉ कर रहा हूँ. so let me draw it in the diagram itself. so what can I do is redraw some vector. so I can draw a vector here, right? redraw कर दिया. similarly इस साइड पे I can redraw b vector also, right? same length same direction, right? and similarly इस साइड पे I can redraw c vector. Now let's see all of these. A cross b. So a cross b is a vector. कहाँ point कर रहा है? So it is pointing up, right? ठीक है? A cross b कहाँ आ रहा है? It is pointing out of the board, right? ठीक है? You can use the right hand thumb rule. Then आप b cross c निकाल के देखो. Where it is pointing? It is pointing outside of the board, right? b cross c. Then you can calculate c cross a, and it is also pointing outside of the board, right? c cross a, it is also pointing outside of the board. So they have same direction, right? Okay. They have same direction. So इन सब का यूनिट वेक्टर, इनका जो डायरेक्शन है n कैप मान लेते हैं, ठीक है? लेट्स से n कैप, राइट? ठीक है. so what is so हमने अब एरिया से देखेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कैन बी डिफाइंड एज, so मैं दो कोई भी एडजेसेंट साइड ले सकता हूँ, राइट? ठीक है. एंड
from that I can compare कि all of these are represent, so half of, for example, A cross B should be equal to half of magnitude of B cross C and should be equal to half of magnitude of C cross A, because they all represent area of the triangle, right? Okay. So they all represent area of the triangle and half can be cancelled and their magnitudes are also same. अगर magnitude भी same आ रहा है and इनका direction भी same आ रहा है, so they are equal. So why are they equal? Because they all signify, ये सारे के सारे क्या signify करते हैं? Area vector को signify करते हैं, ठीक है? इनका magnitude क्या represent करता है? Area. So you already know area of the parallelogram, right? ठीक है? So geometrical interpretation इसका area से है. So let's read it from the back side of the NCERT. So area of the parallelograms formed by these two sides represent any two sides represented by A, B and C as adjacent are equal. So that does not make too much sense. So we have done with triangles. ठीक है, हमने इसको triangle से देख रहे हैं and we can say कि geometrical interpretation. So through this and this, since area of triangle ABC is same through all three calculations, right? Through all three calculations. And A cross B, B cross C, C cross A have same direction. So these represent, ये क्या represent करते हैं? These represent area vectors and okay, so let's move to next question. So last question on this page is 11th. Find the sine of the angle between. So साइन थीटा आप दो मेथड से निकाल सकते हैं. पहली तरीका आप पहले cos थीटा निकाल लीजिए. तो cos थीटा इज a डॉट b divided by magnitude of a and magnitude of b. So a dot b is defined as 3 into 2 plus में 1 into minus 2 plus में 2 into 4 divided by square root of 9 plus 1 plus 4 and magnitude of b कितना है? 4 plus 4 plus 16. So ऊपर वाला कैलकुलेशन आ रहा है 6 minus 2 plus 8 divided by square root of 14 and square root of 24. So numerator simplifies to 12. Denominator में 14 can be written as 2 into 7 and 24 can be written as 2 into 2 into 2, 8 into 3. So दो बाहर चलेगा and we get 12 divided by 2 into 2 and under root 21. So ये 2 cancel हुआ 6, ये 2 cancel हुआ 3. So I get 3 by root 21. But this is the value of cos theta, right? Okay. So cos theta is 3 by root 21. So we can find sin theta now. So as plus minus 1 minus cos square theta. But we will only take the plus 1 this time. Okay. Because if you remember, cos theta is between minus 1 and 1, right? For theta belonging to 0 to pi, right?
but sin theta is always positive, right? It is between 0 to 1, right? क्योंकि second quadrant में भी positive होता है, so we will neglect the negative one. So sin theta will be, let's say for now, let's write plus minus, because I'm using sin square theta plus cos square theta. So 1 minus 9 by 21. So I get 11 by 21. So, but not taking the, so sin theta cannot be minus 11 by 21. So square root के साथ. So sin theta कितना होगा? Plus. So let's check the answer and let's do method 2 also. So this is question number 11th. So 11th का आंसर है 2 by root 7. So 2 by root 7. Oh yes. जब यहाँ पे 9 माइनस करेंगे, so this will be 12 and 12 and sin theta is, I can cancel 3, so अंदर बच रहा है 4 by 7, so this is 2 by root 7. So correction. But method 2, so you can use, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं डॉट प्रोडक्ट यूज किया क्योंकि डॉट प्रोडक्ट इज इजियर टू कैलकुलेट और उससे cos थीटा मिलेगा एंड sin थीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट? ठीक है. So but if you want to find sin theta directly, you can do that. You can do that by magnitude of a cross b divided by magnitude of a and magnitude of b, using the simple definition कि a cross b कितना होता है? It is magnitude of a magnitude of b sin theta in cap, and आप इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लीजिए and you will get a cross b का मैग्नीट्यूड is magnitude of a magnitude of b sin theta, and n cap का कितना होगा? मैग्नीट्यूड 1 होगा, so that goes away and you can find sin theta as this definition now. So इसके लिए हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा? पहले a cross b निकालना पड़ेगा. So that is the thing that will take time. डॉट प्रोडक्ट में बिल्कुल टाइम नहीं लगा था, क्रॉस प्रोडक्ट में थोड़ा टाइम लगेगा. So but 3 1 2 and 2 minus 2 4. So 3 1 2 2 minus 2 4 I j k. So 3 1 2 2 minus 2 4. Okay. So a cross b 1 2 minus 2 4 j negative j and 3 2 2 4 plus k 3 1 2 minus 2. इसको ओपन किया, I get 4 plus 4 माइनस j के साथ में 12 minus 4 प्लस k के साथ में minus 6 minus 2. So I get 8i minus 8j minus 8k. So अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है. So magnitude of a cross b is 8 square plus minus 8 का square, which is 8 square plus 8 square. So I can take 8 outside, अंदर बचा root 3, 8 root 3. Let's find magnitude of a and magnitude of b also. So magnitude of a हमने ऊपर निकाल रखा है पिछले क्वेश्चन में. Magnitude of a 3 1 और 2 के है, ठीक है. So magnitude of a is 9 plus 1 plus 4, which is root 14. Magnitude of b इसके coefficients के square, which is 4 plus 4 plus 16, which is root 24. And now we have value of sin theta, and sin theta is magnitude of a cross b, which is 8 root 3 divided by root 14 and root 24. Let's simplify everything. So 8 root 3 and नीचे आ रहा है, I can take 4 outside क्योंकि
Yeah, there are 4 2's inside the square root and अंदर बच रहा है 7 और 3, so which is 21. So this is 2 and I can cancel root 3 also. So root 3 ऊपर से cancel किया तो नीचे बचेगा root 7. Okay, so this is value of sin theta. And sin theta is 2 by root 7. So we can find theta now. ठीक है, मैं sin theta निकालना था. So got done. So 2 root 7, 2 by root 7. Is this correct? So it is the same answer as we got from the uh, dot product, right? Okay, and sin square plus cos square theta is equal to 1. So you can use this also. Nobody is stopping it. So, but dot product will take less time. So 11 questions are done. Let's move to 12th question. A, B, C, D are points with position vector. So these are OA vector, OB vector and OC vector. So ये origin है and A का position vector given है. So OA vector कितना है? I plus j minus k. So from this I can find coordinate of A. कितना होगा वो? 1, 1, minus 1, right? And then मेरे पास कोई point, similarly कोई point B है. So from this I can find OB vector. So position vector given है B का, which is 2i minus j plus 3k. From this I can find B का coordinate, which is 2, minus 1, 3. Similarly OC vector से, which is 2i minus 3k. I can find the coordinate of point C is x to coordinate 2 है, y वाला component missing है तो 0, z वाला minus 3 है, OD vector. So position vector OD, so of point D, so 3i minus 2j plus k. So let's just checking all of these. So 2 minus 1 3, 2, ठीक है, 3 minus 2 1. So ठीक है, the coordinates of D are 3 minus 2 1. So find the projection of AB vector along CD vector. तो उसके लिए हमें क्या निकालना है? AB vector. So AB vector is a vector joining from A to B, right? ठीक है, it's a vector joining from A to B. So final point क्या है? B. So B minus, so you can do with two methods, right? ठीक है, AB vector you can find using this triangle also, right? आपके पास OA vector given है, right? OB vector भी given है and you can see कि AB vector आप निकाल सकते हो since in this triangle OA vector plus AB vector किसके इक्वल है? OB vector के इक्वल है, right? Triangle law, so AB vector is OB vector minus OA vector. Final minus initial, right? Or you can just simply subtract these coordinates, right? So which is 2 minus 1 I cap plus minus 1 j cap plus 3 plus 1 k cap. So हमें AB vector मिल गया I cap minus 2 j cap plus 4 k cap. Similarly, let's find, क्या निकालना है क्वेश्चन में? CD vector. So CD vector. So final point D है, तो coordinate of D minus coordinate of C. So 3 minus 2 I cap plus minus 2 minus 0 j cap plus 1 plus 3 k cap. So CD vector is I cap minus 2 j cap plus 4 k cap.
एंड नाउ क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर अलॉन्ग सी डी वेक्टर है. सो प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर along CD vector. By definition, it should be AB cos theta, right? And हमें पता है इसकी वैल्यू कितनी होगी. This is AB vector dotted with CD cap. ठीक है ना. A vector का position on B vector is A vector dotted with B cap, right? So let's find CD cap. So let's find magnitude of CD, which is square root of 1 plus 4 plus 16. So it is square root of 21. So हम क्या निकाल सकते हैं. CD cap is 1. So I have to divide that whole I cap minus 2 j cap plus 4 k cap, and इसको मुझे किससे डिवाइड करना है. I have to divide this whole thing with root 21. So now we can find AB, which is I minus 2j plus 4k का dot product with CD cap, which is I minus 2j plus 4k divided by root 21. So 1 by root 21 I can keep outside, and अंदर मैं dot product ले लेता हूँ. So I dot I से I will get 1 into 1. J वाले coefficients are minus 2 and minus 2. K वाले coefficients are 4 into 4. So I get 1 by root 21, and ऊपर 2 plus 4 plus 16, which is 22. So 22 by root 21. So if we have to, we'll simplify the answer. So let's see. So what is the projection of 12th का आंसर. 12th का आंसर है root 21. तो क्या गड़बड़ हो गई यहाँ पे. हाँ, so 1 into 1 is 1. So this is 21, right? The sum is coming out to be 21. ये स्टेप में गड़बड़ होगी. So answer is square root of 21, which is correct from back side of the book. So let's move to next question. Using vectors find the area of the triangle ABC whose vertices given है यहाँ पे. ठीक है. A vector given है. So A का point given है 1 2 3. B का coordinate given है 2 minus 1 4, and C का coordinate given है 4 5 minus 1. So this is our triangle. So to find its area, I can just find two adjacent vectors. So let me find BC vector and BA vector. ठीक है. For it doesn't matter in which कौन सा edge आप कौन सा vertex आप choose करते हो. ठीक है. I'm just choosing B. It doesn't matter. So let's find BC vector and let's find BA vector, and I will define area as half of BC cross BA का magnitude, right? So by definition of cross product, area of triangle. So BC vector कितना आ रहा है. फाइनल माइनस इनिशियल लिख के. So 4 minus 2 I cap plus 5 plus 1 j cap plus minus 1 minus 4 k cap, 2 I cap plus 6 j cap minus 5 k cap. BA vector B2A. So it is final point is A. So 1 minus 2 I cap, 2 plus 1 j cap, and 3 minus 4 k cap, which simplifies to minus I cap plus 3 j cap minus k cap. So now we can find the cross product BC cross BA, which is defined as the determinant of IJK. Coefficients of BC 2, 6 and minus 5,
coefficients of BA -1, 3 and -1. So checking the ठीक है -3, 1, 2, 6, -5. Okay, so let's open this. I cap के साथ में I'm getting 6 -5, 3 -1, minus J cap के साथ में I'm getting 2 -5, -1 -1, K cap के साथ में I'm getting 2, 6, -1, 3. So this simplifies to -6 plus 15 minus J cap के साथ में -2. So minus J cap के साथ में -2. So minus minus plus and एक और minus -5 plus K cap के साथ में 6 minus and minus plus 6. Okay, so this simplifies to 9 I cap plus 7 J cap plus 12 K cap. So let's find now magnitude of BC cross BA. So this will be square root. तो यहाँ पे हमें एरिया मिल गया half of 9 square plus 7 square plus 12 square root के साथ. So which is 81 plus 49 plus 144. So 81 and 49 कितना हुआ? So 0, 1, 12, 130 plus 144, 4 and 7, 274. So square root of 274 divided by 2. Let's see if we can take something common, but answer check करते हैं पहले. So this is question number 13. So ठीक है, square root of 274 divided by 2. So we got the correct answer. So this is the area of the triangle ABC. Square units, right? So let's move to the last question of this video. And the notes will be available below the lecture. So 14th. So using vectors, prove that the parallelogram on the same base and between same parallel lines have equal areas. Okay, so मैं दो पैरेलल लाइंस बना देता हूँ, ये रहे, ठीक है. So नीचे वाले बेस पे I will assume a vector, let's say A vector, going from here to here. So A vector, and I can construct a parallelogram using another vector, let's say B vector, right? Okay. So ये रहा B vector, and this is B vector, यहाँ पे भी draw कर सकते हैं, ठीक है, since it's a parallelogram, right? And this is A vector. So so मेरे को एक और parallelogram बनाना है जिसका base same है, but let's say यहाँ पे there is C vector, let's say this, and यहाँ पे इससे parallel we can draw another C vector, and since this base is A vector, तो ऊपर वाला भी A vector ही होगा, right? So area of parallelogram, let's say P Q R S, and इसको मैं नाम दे रहा हूँ R dash S dash. So parallelogram P Q R S क्या होगा? So this will be magnitude of A cross B, right? Okay. And by definition we can say this is magnitude of A, magnitude of B into sine of the angle between these two, right? So which is sine
ए और बी के बीच में एंगल कितना है, ये रहा पी, राइट, ठीक है, तो साइन पी, ओके, एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर डैश एस डैश क्या होगा, विच इज ए का क्रॉस प्रोडक्ट विथ सी एंड विच इज magnitude of A, magnitude of B and sin. So अब मैं P की जगह, so P does not look good, so मैं यहाँ पे इसको एंगल को मार्क कर देता हूँ कि I am marking this larger angle as theta 1, ठीक है, and the smaller angle जो which is the angle between A and C as theta 2, तो यहाँ पे क्या आएगा theta 1, right, ठीक है, in this I will get theta 1. The angle between A vector and B vector is theta 1 and here I will say sin theta 2. So if these results are same, then I can safely say, so this is A cross C, so A vector C vector. So let's look carefully into the diagram, and since the distance between these two is not changing, तो मैं ये height का calculation करता हूँ, ये height कितना है, right? Area of the parallelogram is base into height, so ये height कितना आ रहा है, and यहाँ पे let's calculate this height, ये height कितना आ रहा है, so height, so let me say PS, so let me call this T and this as T dash, so in triangle PST I have to find SG, so SG divided by PS is nothing but sin theta, so perpendicular by hypotenuse, so I can find the length of SG as PS sin theta. But what is PS? PS is the magnitude of B vector, right, so ST and sin of kitna, so theta 1 या theta 2, so this is theta 1, so theta 1, so and now we can find SG is B vector into sin theta 1, okay, and this is the height, right, H, and in triangle PS dash T dash I can find, so from the figure क्या बोल सकते हैं हम from the figure कि S dash T dash divided by the hypotenuse S dash P is nothing but sin theta 2, and we can find S dash T dash is equal to S dash P. S dash P कितना, वेक्टर C का मैग्नीट्यूड, राइट, ठीक है, सो मैग्नीट्यूड इनटू sin theta 2, एंड बट ये कितना, S dash T dash is also the height H, right, so from these two you can see कि ये क्या represent कर रहा है, बेस, सेम बेस इनटू सेम हाइट, राइट, ठीक है, so now we can compare कि area of parallelogram, right, ठीक है, so this basically this formula becomes base and B, magnitude of B into sin theta 1 कितना है, height, right, ठीक है, and this is, and C into sin theta 2 कितना है, this is also height, right, ठीक है, so they both represent the same, and we have just proven कि the same result which we had in class 9th और 10th की अगर सेम पैरेलल लाइंस के बीच में पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करोगे तो यू विल हैव सेम एरिया, सो सेम गोज फॉर द क्वेश्चन फॉर द ट्राइंगल्स, राइट, कि अगर यहाँ पे इफ आई गिव सेम बेस पे दो ट्राइंगल्स दे विल आल्सो हैव सेम एरिया, राइट, A1 will be same as A2, right, ठीक है, and all you have to do half of A cross B and half of A cross C, right, so thank you for watching, so hopefully you build some concept in solving these questions, so see you in the next lecture, and notes will be available below the video.